धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मीडिया के अपने मित्रों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत इस संकल्प को, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। पिछले 2 दिनों में पूरे देश भर में आपने चर्चा को बदला है, एक सकारात्मक सोच खड़ी हुई है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है। और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा, इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया। मैं उन योजनाओं पे आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की बात कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान की बात हो, 6,000 हर किसान के खाते में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की बात हो। जो गरीब कभी अपनी इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचता था, 22 करोड़ से ज़्यादा गरीबों की इंश्योरेंस करवाने की बात हो। गरीब का बैंक खाता बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी नहीं खुलता था, उन बैंकों का उनका बैंक खाता भी खुला। और इस कोविड-19 की स्थिति में अगर सीधा खाते में पैसा किसी ने भेजा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के कारण भेजा। तो गरीब की हर समय चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था, और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं। कल एमएसएमई सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं। अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई। और कहीं ना कहीं जो इतना सकारात्मक वातावरण बना, लोगों के पॉजिटिव मैसेज आए कि ये अच्छा हुआ, इससे उद्योग को फ़ायदा मिलेगा, छोटे उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा, तो इससे गरीब को भी बल मिलेगा। तो आज का जो हम करने जा रहे हैं, गरीब के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए और 1-2 बिंदु किसानों के लिए, आज बाकी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने आएगा। तो इसमें मुझे केवल इतना कहना है, और मोदी जी ने इसको 12 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली घोषणा है, जो हमने अब तक कदम उठाए, वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है, ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। Again, one more thing which I'd like to draw your attention before I go to today's announcements. Liquidity support for farmers and for the rural economy has been happening in the last 2 months. I'm referring only to those things which have happened in March, April, which is the COVID duration, the time when COVID hit us and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, activities through the banks have been happening. I want to just draw your attention that 63 lakh loans of 86,600 crores have been approved in agriculture area between 1st March and 30th of April. Again, refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD
to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. Just only in March, NABARD has refinanced 29,500 crores through the rural cooperative banks and the regional rural banks. Then again, rural infrastructure. Also through a fund which is operated by the NABARD is the RIDF, which is the Rural Infrastructure Development Fund. Through this, only again in March 2020, a support of 4,200 crores has been provided for rural infrastructure. So rural areas and their infrastructure work is also being provided for in March alone to the extent of 4,200 crores, and that's happened during the COVID period. And finally, state governments do also get working capital assistance, and to the extent of 6,700 crores have been sanctioned for them to procure agricultural produce, which means they can take things from the farmer, they can provide things to the farmer, and when they procure agricultural produce, that money goes into the hands of the farmers themselves. And what is the amount there? 6,700 crore as working capital was sanctioned for state agencies to do the agricultural produce procurement. That again is money going into the hands of the people in the ground, particularly in the rural areas. I'll go over to the urban poor, but before that in Hindi. कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीज़न भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है, और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। I spoke about the rural areas, rural poor, rural money reaching the hands of the farmers and so on. Now I just very quickly mention about urban poor. In just the last 2 months again, during the COVID period again, what activity has happened to reach out to the urban poor, which includes migrants? Government of India has permitted state governments to utilize State Disaster Response Fund, which goes from the center, for setting up shelter for migrants and providing them food and water. Just rough estimate that I'm giving you, 11,000 crores were sent in that name through the SDRF, with which they run the shelter homes, with which they give them food, with which they take care of them. And that money was also sent from the center. Of course, states do have a right, but that was given. And using that money, many of the migrants have been attended to. So I want that to be kept in context when we talk about attending to the migrants. Again, there are shelter homes which are under the shelter for urban homeless category. That is something which normally is there. But in those shelter for urban homeless, 3 meals are provided entirely at the cost of the central government. So homeless who live in urban areas, particularly in the COVID situation,
are getting 3 meals per day. And I'm not saying this as though, oh, we've done this. I'm saying more from the point of view of we are conscious. We are attending to the migrants and we are giving them in various different ways. Food, taking care of them in the shelters, reaching cash to them. All this has been done and therefore I'm enumerating. And did I do this some other time? Last year? No. I am showing you what has happened in the last 2 months, the critical lockdown period. So in shelter homes, 3 meals are being provided for people who are urban homeless. Now, the other thing, you may recall when the Prime Minister addressed the nation, how India's capacities can be utilized so that we can serve the globe, and how those capacities are lying dormant and we are the ones who have to give the stimulus, all of us will have to. 12,000 self-help groups all over the country. This is an example which Honorable Prime Minister referred to. 12,000 SHG groups have produced over 3 crore of masks and 1.20 lakh liters of sanitizers, again during this COVID period. And the self-help groups in urban centers are with urban poor. So urban poor are contributing also in this COVID period. And self-help groups, as you know, is something which is supported by the central government also. Another experiment which was successful is for disbursing revolving funds to the SSGs, and these revolving funds for the self-help groups have also become on board a Paisa portal. It is called PA, all in capital, I is small and SA, Paisa portal, as of April. And now many state governments, seeing the pilot project which had happened in Gujarat, want their people also to get onto this, and through this a lot of across the state benefits which they can get will be available for the SHGs. And lastly, for the urban poor, 7,200 new SHG groups have been formed, newly formed for the urban poor, and that commenced from 15th March. Critical COVID time. New self-help groups for whom assistance get given and they get benefit from revolving funds and so on to catch on with what they want to do for their livelihoods. So during these 2 months, COVID period, you have these activities which have happened with central government participating actively in these 2 months only. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब